हाय हरीश, कैसे हैं आप? हाय नितिन, आई एम वेरी वेल, हाउ आर यू? आप वेल तो मुझे नहीं लग रहे, खैर। थोड़ा आवाज आज खराब है बट एनीवेज। हाँ, तो हरीश, बहुत एक्साइटिंग डिस्कशन होने वाली है। रीजन बीइंग वाइन एंड अल्कोहल इंडस्ट्री एज अ होल। सब लोग बहुत फैसिनेट होते हैं इस इंडस्ट्री से, राइट? पीपल, a lot of people obviously consume, a lot of people want to know about it. So it's very fascinating industry overall, and आज हम आपसे सीखेंगे इस इंडस्ट्री की nuances, इस इंडस्ट्री में क्या सप्लाई चेन होता है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है, कैसे मार्केटिंग करनी चाहिए वाइन की। तो आई एम श्योर काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स आप हमें बताएंगे आज। 100%। तो सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं, एक टर्म आप बोलते हैं सोमेलियर, राइट? तो ऑडियंस के लिए आप हमें एक बार ये बताइए कि हु इज़ अ सोमेलियर? So sommelier is a person, in the simplest term, is a wine waiter. अ वाइन वेटर। Yes, somebody who is working in the restaurant, selling wines, has got good knowledge about wines, can be called as a wine sommelier. That, in the simplest term, this is what it is. Of course, one can become a sommelier after having certain level of certifications, education, and experience. That. तो हमें अगर एक प्रॉपर सोमेलियर की डिग्री चाहिए, क्या ऐसी कोई डिग्री होती है सोमेलियर की? So there are different trust or bodies, you could say, that gives you certifications or certify you as sommeliers, right? So there is something called Wine and Spirit Education Trust, which is based in London. Then there is called Code of Master Sommeliers. Again, that's a body that is based between London and US. Now they have different levels wherein they have a structured approach towards training people, right? And once you do those courses, you are knowledgeable about wines. You know what kind of wines to, select for your restaurant, how to talk about those wines, how to sell those wines to the consumers, and how to do food and wine pairings, and how to price those wines, right? Doing this course naturally helps you in developing your understanding about the overall beverage aspect of the business. So yeah, that's how you can become a sommelier. ओके। एक सोमेलियर की क्या टॉप 3 ट्रेट्स होती हैं जिससे अगर आपने बोला कि ऐसे कोई फॉर्मल डिग्री नहीं है, बट देयर आर वेरी कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशंस दैट यू कैन डू। सो हाउ डू यू फिगर आउट कि ये सोमेलियर अच्छा है और ये नहीं है? In my opinion, a sommelier has to start with empathy first. Empathy is about knowing what the consumer want. ये नहीं कि मुझे एक्सपेंसिव वाइन बेचनी है, मुझे मेरा टारगेट अचीव करना है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू sell right, left, center expensive wines, right? I have to ensure that I understand what is the consumer, what they want, what they like, what they don't like, what they are eating, and basis that I have to recommend wines, right? So that's where empathy comes first. The second part is perseverance, okay? Because this journey of becoming a sommelier is so difficult, okay? It's not like आपने 10 wine taste कर लिया और you become a sommelier. You have to study a lot of stuff. In fact, if I have to say, I haven't studied enough in my 10th and 12th as much as I've studied in my entire wine journey. मैं काम करता था, रात को पढ़ाई करता था 12 से 3 के बीच में, and that's how I studied. मैंने ट्रेन में पढ़ाई किया है, मैंने रिक्शा में पढ़ाई किया है, मेट्रो ट्रेन में पढ़ाई किया है, just because I'm applying for this competitions and certifications to study, and you need a lot of patience to study this wines, right? So perseverance is the second part. A good sommelier should be knowledgeable. Okay, अगर आप गेस्ट से बात कर रहे हैं and if they're giving a reference of certain wines and you might not have it, but you should have a knowledge enough to recommend a wine which is available in your menu, which is similar to that, right? And also knowledge of the overall food and beverage, how it works with different food, how you consume wine, how you enjoy wine, and the entire knowledge is important. So yeah, empathy, perseverance, and knowledge are 3 traits that I would say are critical for a good sommelier. आपने एक लाइन बोली, हाउ डू यू कंज्यूम वाइन, राइट? लॉट ऑफ पीपल हैव दिस और डू दिस मिस्टेक कि लोगों को टेस्टिंग नहीं आती वाइन की कैसे करनी चाहिए। तो क्या तरीका रहता है सही वाइन टेस्ट करने का? आई नो यू कांट शो इट राइट नाउ विद अ ग्लास और समथिंग, बट कोई ऐसी चीजें होती है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए टू वाइल टेस्टिंग अ वाइन? So historically, if you look at it, wine as a beverage is attached to a lot of snobbery, right? And you would always see people saying कि wine अगर पीना है तो ऐसे ही पीना है, यही ग्लास में पीना है, ऐसे ही पकड़ना है, right? So in the simplest term, okay, अगर wine हम पीते हैं तो कैसे पीते हैं? Is the moment you get a wine into your glass, right? You look at the color, because the color tells you a lot of stories, right? In the sense कि wine का
whether it is coming from a cold climate or a warmer climate. From the color you can identify. अगर light है तो cool climate है, darker shades है, darker hues है, so it's coming from a warmer climate. Okay, then you see knows the wine. From the aromas you understand whether it is a young wine or it's an old wine, right? So there are certain flavor profiles associated because of the fermentation process, because maybe the grape varietal or the aging process. So that's what you understand. Now when you taste the wine, you confirm what you understood at the sight and at the nosing of the wine, right? So at the palate you confirm, you roll the wine on your palate, you understand the flavor profiles of the wine, and then you say, okay, this is the wine that confirms that it is coming from a cooler climate which has fresh cut grass or different aromas into this, and this is how I enjoy the wine, right? So that's how we taste the wine. And usually when we do professional tasting, we spit the wine out. If we are enjoying the wine, you can consume the wine, and you can basically drink the wine. So that's how you taste the wine professionally and understand the nuances of wines. और ऐसी कितनी वाइन्स हैं, कितने टाइप की, कितने नंबर ऑफ वाइन्स होंगी? There are more than upwards of 6 lakhs plus grape varietals, right? 6 lakh plus grape wines. And the number could be more or less, but the whole idea is that every region, जैसे कि हम कहते हैं ना कि अगर इंडिया की बात करें तो हर रीजन का खाना अलग हो जाता है. Every 100 kilometers is the different cuisine altogether, right? Right. Wine में भी वैसे होता है. So if you go to Italy, every smaller region will have different grape varietals, and every region will have their different wines associated with their regions. तो ये होता है कि there are so many varietals that you can it's impossible to consume all the styles in one lifetime. Right. ये तो लोकली प्रोड्यूस होती हैं, राइट? तो इसको बनाने में, अगर हमें कोई वाइन बनानी है, आज मुझे वाइन बनानी है, तो मेरे को क्या करना होगा? हाउ टू मेक अ वाइन? So basically you can make wines at home also, technically. The whole idea is that you take a grapes, okay? Again, the one that we have at home, okay, those grapes with seeds are different quality grapes, and the one that we make wines with are the grapes made specifically for winemaking, right? And there's a different way of growing them also, right? बट फिर भी हम घर वाले ग्रेप से बना सकते हैं, बट जो वाइन्स के जो ग्रेप्स हम लोग बात कर रहे हैं, okay, that comes from a certain species of vineyard wines, right? And those certain species produce quality grape varietals that helps you creating those unique flavors into the wine, right? So that is the uniqueness about the species of the grapes or the vineyards, and that's the quality wine that they produce. But just a talking point, if you want to produce a wine at home, what you can do is कोई भी grape ले लो आप, okay, just crush कर दो उसको, leave it with the skin, because skin के ऊपर उसका yeast होता है, natural yeast होता है, right? Again, usually wineries में क्या होता है, जैसे the moment you harvest the grapes, immediately उसका wine बनाने को process करते हैं. You cannot keep it for 3-4 days and then produce wine, because उसका जो unique yeast होता है, it dies immediately, right? Sure. So that is the thing. So when at home, okay, take the wine, crush it, and leave the grape juice with the skin, and let the fermentation begin. Okay. बस हमें क्रश करना है ग्रेप्स को, उसके बाद उसको छोड़ देना है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे. होता क्या है कि जो यीस्ट होता है, ओपन में रखना है या किसी कंटेनर में रख दो आप, उसमें ढक के रख दो. लेट द फर्मेंटेशन प्रोसेस बिगिन बिकॉज ऑफ द नेचुरल यीस्ट, राइट? एंड व्हाट इज फर्मेंटेशन? बेसिकली कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, राइट? तो जो भी ग्रेप में नेचुरल शुगर होता है, बिकॉज ऑफ दिस नेचुरल यीस्ट, इट ईट्स अप द शुगर, एंड द बाय प्रोडक्ट इज अल्कोहल, carbon dioxide and heat, right? So that's how we naturally produce wines. Again, if you're using quality grape varietals, you'll end up producing quality wine. जो घर में बनाते हैं हम चल जाता है, बट तो हमें क्या इसमें कुछ मिक्स करना होता है टू बिगिन दी फर्मेंटेशन प्रोसेस? अगर घर पे कर तो शायद आपको यीस्ट की जरूरत पड़ सकती है, बट अगर नेचुरली आप अगर जो क्लासिक ग्रेप वैराइटल्स के साथ आप अगर काम कर रहे हो, यू डोंट नीड टू ऐड एनीथिंग. सिर्फ ग्रेप्स क्रश करने हैं बस. एग्जैक्टली. एंड कितने टाइम में ये फर्मेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी? So it depends. Again, every fermentation it depends upon the amount of sugar it is, but generally 40 to 50 hours of fermentation. 40 से 50 घंटे बाद वाइन बनने की चांसेस है हमारे. Yes. Again, जो white wine बनाते हैं, you can make it with white grapes as well as red grapes. But to make red wines, you need red grapes only. Right? Again, rosé है, so you keep the white wine in contact with the red grapes for some time. थोड़ा रोजी कलर आ गया, थोड़ा रेडिश कलर आ गया, you remove the skin. जो भी कलर आता है वो स्किन के वजह से आता है. अगर आप रेड ग्रेप को आप अगर
क्रश करोगे द जूस इज वाइट इन कलर, इट इज नॉट रेड इन कलर. द स्किन गिव्स यू द कलर ऑफ द अच्छा, इंटरेस्टिंग. वाइन, राइट? सो ये कॉन्सेप्ट है वाइन का. इंडिया में अगर मैं बात करूं वाइन इंडस्ट्री की ओवरऑल, हाउ मेनी वैरायटीज, और आपने रोजे बोला, ऐसे अलग अलग ब्रांड्स हैं, राइट? ब्रांड्स तो चलो सुला हो गया और वो हो गए, बट डिफरेंट फ्लेवर्स बोल लेते हैं उनको. तो ऐसे कितने मेजर वाइन्स हैं जो यूज किए जाते हैं इंडिया में? सो देयर आर प्राइमरी 6 to 7 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ वाइन. उसमें सबसे होता है कि एक स्पार्कलिंग वाइन होता है, वो कैटेगरी में शैंपेन आता है, प्रोसेको आता है, कावा आता है. फिर वाइट वाइन होता है, स्टिल वाइन, वाइट स्टिल वाइन, ठीक है, जिसमें हम जो नॉर्मल जो वाइन्स हम पीते हैं, राइट, विदाउट कार्बोनेशन, वो स्टिल वाइन्स होती है. देन देयर इज रोजे वाइन्स. रोजे वाइन्स क्या होता है? पिंक कलर जो वाइन्स हम पीते हैं. देन देयर इज रेड वाइन, जो रेड इन कलर होती है. देन देयर इज डेजर्ट वाइन, ओके, जो हम यूजुअली थोड़ी मीठी होती है, खाने के बाद पीते हैं. एंड सर्टन फोर्टिफाइड वाइन्स जो होती है. सो देयर आर 5 or 6 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ वाइन. तो जितने भी आप वाइन देखते हो, दे फॉल इनटू ईदर ऑफ दिस कैटेगरीज. Coming from any of the countries in the world, they will fall into one of these categories itself. That way. Okay. So that is broader way, that is the categorization of wines. और इंडिया में भी कोई ऐसा स्टेट है जहाँ पे वाइन ज़्यादा बिकती है? Right. प्रोड्यूस कहाँ पे होती है मैं पहले वो बताता हूँ. सप्लाई चेन के बारे में बात करते हैं वाइन की. तो इंडिया इज अगेन यूनिक कंट्री. एंड अगर आप हर एक स्टेट देखोगे इंडिया के, एवरी स्टेट इज इट्स लाइक अ डिफरेंट कंट्री in terms of alcohol, right? हर एक का rules and regulations अलग है. तो जो महाराष्ट्र का rules and regulation is different from Goa, though it's neighboring states, right? If you go to Karnataka, it's different altogether. If you come to Delhi, it's completely different. So the alcohol policies are regulated from state to state, right? Now wine is produced primarily in a cooler climate. तो अगर हम इंडिया में cooler climate देखते हैं तो वो आता है नासिक. Again, Nasik is on a slightly higher altitude as compared to Mumbai or other states, right? So wine is produced into Nasik primarily, which is one of the biggest wine producing destinations in India. Apart from Nasik, there are wineries in Hampi in Karnataka. There are wineries in Bangalore, where Grover's Hampa is based, right? So these are the few regions that produce quality wines in India. So Nasik, Hampi, and Bangalore or that way. And then there are certain experimentations happening in Himachal with a lot of fruit wines and different flavored wines that way. So this is how the wine industry is based in India. Okay. और हमें एक वाइन अगर मैंने बना ली, मान लीजिए, राइट, अब मुझे क्या लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं या क्या नेक्स्ट स्टेप रहता है कि मैं उसको बेच पाऊँ? There are a lot of licenses involved into any manufacturing, right? So right from आपको जगह का लाइसेंस लेना होगा, वाइनरी का लाइसेंस लेना होगा. I'll tell you something very unique to alcohol industry, okay? So there is something called label registration, which happens every single year. The usual time is in April, right? तो अप्रैल में आप जो भी लेबल्स देखते हो बॉटल के ऊपर, be it wine, spirit or any alcoholic beverage, they have to register with each state. Once again. Every year, okay? And during that point of time, the entire trade, there is a shortage of supply of alcohol because जो है वो है, नया नहीं आ सकता जब तक वो रजिस्टर नहीं होता तब तक. तो अगर आपने प्लान करके रखा है, then you will have enough supply of produce throughout. अगर नहीं किया है, then there will be shortage of supply. But ऐसा क्यों होता है? So the whole idea is that when you register a label, okay, you have to pay a certain fees also, right? And this is also to ensure that there is no counterfeiting that is happening. And there are various measures that the government and the body takes to ensure that they are aware of what produce is coming to the country and what is being served. And if it is registered through those processes, then they can identify what is the product, what is the batch, and so on and so forth. So there are various other regulations that are involved into the overall process. That way. आपने बोला कि प्रोड्यूस हैपनिंग इन द कंट्री, तो इंडिया में जो वाइन कंज्यूम होती है, क्या वो इंडियन ब्रांड ज़्यादा कंज्यूम होते हैं या बाहर के इम्पोर्टेड ब्रांड ज़्यादा कंज्यूम होते हैं? So it's a good mix of international as well as Indian wines, okay? पर अब अगर आप ऑफलेट देखोगे तो there is a good demand for Indian wines, and the reason being कोविड के टाइम the supply of imported wines was limited.
राइट. तो जो था वो था इंडियन वाइन्स, राइट. सो देयर वाज अ गुड, I mean, Indian consumers got a good tasting of Indian wines and a good access to Indian wines, because of which they started appreciating those Indian wines, and now Indian wines are doing fantastic in the country. That way. और क्या इंडिया एक्सपोर्ट भी कर रहा है वाइन? 100%. So there are brands like Sula, Grover Zampa, Fratelli are exporting upwards of 20 plus countries globally. And Indian wines are popular globally also. I mean, and if you look at it, the quality of the wines has improvised drastically in the past 5 to 10 years, right? And India is known for their wines now. Like that is the kind of, you will see that happening in the future. Because of the focus of the producers on producing quality wines at the international level. तो आपने बोला 20 कंट्रीज में इंडिया इज एक्सपोर्टिंग वाइन, बट ओवरऑल वर्ल्ड वाइड अगर हम वाइन इंडस्ट्री की बात करें, सबसे ज़्यादा वाइन कंज्यूम कहाँ की जाती है? यूरोप में की जाती है, यूरोपियन कंट्रीज, बिकॉज उनका कल्चर इज बेस्ड ऑन वाइन, राइट. कोई यंगस्टर जो 18 साल 20 साल की उम्र में, दे स्टार्ट ड्रिंकिंग वाइन्स, दे स्टार्ट कंज्यूमिंग वाइन्स. इनफैक्ट वाइन इज अ पार्ट ऑफ देयर टेबल कल्चर, राइट. जो खाना खाते हैं, जो डिनर टेबल पे बैठते हैं, दे कंज्यूम वाइन विद देयर फूड. एंड सो वहाँ पे सबसे ज़्यादा वाइन कंज्यूम की जाती है ग्लोबली. पर आई एम श्योर कि कंट्रीज लाइक यूएस, countries like Russia and all those places have a huge consumption of wines otherwise. बट ऐसा क्यों है कि यूरोप में ज़्यादा कंज्यूम की जाती है, नॉट इन इंडिया और यूएस? टेबल मैनर्स की हमने बात की कि वहाँ पे टेबल में भी होता है, खाना खाते टाइम भी लोग वाइन साथ में पीते हैं. बट क्या कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये हुआ वहाँ पे? ऐसा कुछ ट्रिगर था जिसकी वजह से यूरोप में कोई क्लाइमेट का रीज़न है, या वहाँ पे ग्रेप्स ज़्यादा अवेलेबल होते थे इस वजह से वहाँ बनती थी? क्या रीज़न था? कोई हिस्टोरिकल रीज़न है क्या? So I'll tell you one funny thing that I recently got to know. Okay. Now जो भी wine producing regions in the world, okay, आप फ्रांस की बात कर लो, इटली की बात कर लो, lot of places where you see humongous cultivation of wines. Okay. अगर आपको कोई भी food item grow करना है, okay, be it mangoes, rice, bajra, whatever, okay, you need a soil which is fertile, okay. But to produce grapes, okay, for wine production specifically, you need a soil which is infertile. Oh, okay. interesting. So you need a soil which does not have access to all natural fertilizers, access to water. So मैं जो कह रहा था कि there are certain grape varietals that are used for producing quality grapes. So they are deliberately left to struggle. The idea is that the roots go deep down, gather all the nutrients. They struggle in terms of the access of the water also. They don't like wet fields. That means they do not like easy access to water. So the whole idea is let them struggle, go deep down and gather all the nutrients and pass it on to the grapes, because we want berries which are much smaller, right? And with concentration of flavors. Now, if you look at countries like France, Italy, and a lot of other places like Germany and all, which are genuinely colder places, right, had a lot of places with infertile soil. So they couldn't experiment with food produce. And that's when they started planting grape varietals. They started experimenting. I'm sure they started planting grape varietals, and that's how grapes came into existence, right? So that is the unique part about these countries, why they are known for good quality wines and grapes, is because they have been historically producing wines for such a long time, right? And because they have easy access to it, it becomes a part of their culture of drinking, right? In fact, there is also another story wherein at one point of time there was so much of excess of wine that they started distilling the wine and producing brandies out of it. So brandies are usually made with cheap quality or inexpensive wines, right? So they take the wine, whatever is excess, they redistill it and they create brandy. डिस्टिलेशन का आपने एक वर्ड यूज किया, राइट? फर्मेंटेशन तो आपने बता दिया था कि उसको हमने छोड़ दिया, यीस्ट से फर्मेंटेशन हो गई. एक बार पहले तो आप ये बताइए फर्मेंटेशन क्या होती है, और फिर आप ये बताना कि डिस्टिलेशन क्या होती है. ओके, सो मैं आपको जस्ट टू मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड, ओके, मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि हाउ यूजुअली any alcohol is made. Yeah. So you start with, say, any grains or whatever the product is, right?
अल्कोहल का क्या होता है कि आप क्या यूज करते हो और आप क्या मतलब कैसे उसको फर्मेंट करते हो, कैसे उसको डिस्टिल करते हो और कितना टाइम उसका डिस्टिलेशन के बाद आप क्या करते हो विल डिटरमाइन वेदर इट इज विस्की, वोडका, जिन, रम, टेकीला। मैं अब एक सिंपल टर्म में बता रहा हूँ कि व्हाट इज अल्कोहल। ठीक है, आप अगर आपको स्पिरिट बनाना है यू टेक ग्रेन्स, ओके, आपको वाइन बनानी है यू टेक ग्रेप वैरायटी, ओके। The fundamental of creating alcohol is that you want sugar in it or you want starch, right? You starch will be converted into alcohol. That's where you take grains, you convert the starch into fermentable sugar, and then you start the fermentation process. Grapes में क्या होता है? You take grapes, there's sugar already present, so you don't have to go through that process of conversion, right? So the whole idea is once you have sugar in any of the product, right? You start the fermentation process. Now fermentation process is conversion of sugar present into alcohol. The byproduct is heat and carbon dioxide. Okay. Now you take that the fermented liquid, right, and you put it into a furnace or you distill it. Okay. What is distillation? Distillation is you take that liquid and you heat it up. Acha. Okay. The alcohol's boiling point is around 78 degrees, right? The alcohol will evaporate and you collect the alcohol separately. Now the collected alcohol is a distilled spirit, which is technically white in color. So it's basically vodka, right? Before distillation, what you have is technically beer, right? Now you take that liquid, you add botanicals to it like juniper and different herbs, spices, and you re-distill it. You can make a gin out of it, right? You take that liquid and put into the white liquid, the neutral spirit, and you put into oak barrels and age it for minimum 3 years. You can call it as a whiskey in Scotland, right? So, if you're producing rum, then the starting product, the base ingredient is molasses. If you're making vodkas, the base ingredient is any grain. Again, for whiskeys, it's grain, right? Gin, again, grain. For wines, it is grape varietals. For tequilas, it is agave. So the main ingredient plus the way you treat it during the process and what you do after aging will define what kind of spirit it is, right? So that's how simply you can explain. आपने एजिंग वर्ड यूज किया, Right. काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। एजिंग बॉटल्स पे लिखा होता है कि ये इट्स अ 100-year-old विस्की और इट्स अ 10-year-old विस्की। वाइन में भी ऐसे ही कुछ रहता है, राइट? सो ये होता क्या है? व्हाट इज द एजिंग? Okay, so between wines and spirit is different. The meaning of that age is different, right? मानो कि कोई विस्की है जो स्कॉटलैंड से आ रही है, ठीक है, उस पर अगर कोई एज नहीं लिखा है, okay, if the whiskey is without any age statement, that means the whiskey is aged for minimum 3 years 1 day in Scotland. Okay, that is the fundamental. If it says, say, do was 12 years old, now it means that every drop in that particular bottle is aged for minimum 12 years. In simple language, youngest whiskey in that bottle is मतलब 12 उसको years. 12 साल पहले बनाया था। 12 साल तक एज किया है. So that liquid is aged into the wooden barrel for 12 years minimum. Now that bottle can have a whiskey of 15 years, 25 years, 30 years, but the youngest whiskey is 12 years. That means it cannot have a whiskey which is 11 years old, right? So that is for spirit. And अगर 15 लिखा है तो same concept, अगर 50 लिखा है similar concept, okay? Now in wines you usually see a year mentioned. It's called vintage. It's a French term, right? Vintage means year of harvest. That means कौन से साल को हमने ग्रेप विन से तोड़ा है. That is called the year of harvest, and that is mentioned on the bottle. Now the price of the wine goes up and down basis the vintage. That means of course data collection हम जो बात करते हैं, right? Insights and data. So we, in the sense in the wine world, they notify or they have a summary of every year कि 99 was a good year. So for example, or 2005 was one of the best vintage in the world, right? So अगर 2005 की bottle आप कोई लोगे, the prices will be up. अगर समझो for example 2006 was not a good vintage maybe, right? The price will drop down. So the price of the wine also is based on what year it is produced and how that year was for that particular region. What do you mean by how that year was? So कभी-कभी क्या होता है, basically wine is farming, right? उसमें क्या होता है, अचानक से बारिश आ गया. When I'm talking about this
European countries where wine is produced prominently, right? Cooler climate. अगर विंड आ गया उससे ग्रेप का क्वालिटी खराब, मतलब ग्रेप्स टूट सकते हैं, राइट, क्रश हो सकते हैं. स्नो आ गया, इट माइट ब्रेक द ग्रेप्स, राइट. या फिर फ्रॉस्ट आ गया, बर्गंडी में बहुत ज़्यादा होता है ये फ्रॉस्ट. उसमें क्या होता है, ग्रेप्स के जो शूट्स होते हैं उसमें आइस जम जाता है. सो दीज आर द थिंग्स दैट डिटरमाइन. कभी कभी अननेचुरल रेनफॉल आ जाता है, राइट, कभी कुछ और आ जाता है, राइट. एंड ऑल दिस things affect the quality of wine. In wines, there is a term called terroir, which is a combination of location, climate, soil, and human touch. Right? इसमें कुछ भी बदलाव आ जाता है, the quality of wine can change. Right? So, अगर say for example 2005, which was a year of perfect rainfall, जितनी होनी चाहिए उतनी हुई. It was sunny. It was a good mix of sunny and cooler, like warm days, cool nights, and the temperature was controlled throughout the year. It was fantastic. Everything was good. The vintage was declared one of the best vintage in the world. And once you know that okay, this is the good vintage, then people buy those wines. उसका demand बढ़ जाता है, and because उसका demand बढ़ता है तो of course price भी बढ़ जाता है. Supply ऐसे ही कम होता है. So right. That's the difference between the demand and supply. Right. तो बट जब वाइन प्रोड्यूस होती है, कोई एक ब्रांडेड वाइन है अगर मैं बोलूँ, लोकल वाइन तो ऑब्वियसली कैन हैव डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ डिफरेंट विंटेज ईयर्स, राइट. बट एक अगर ब्रांडेड वाइन है और उसका प्रोसेस तो सेट होता होगा कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एकदम प्रॉपर सेट है, डिफाइंड है, एसओपी है, तो क्या उसकी क्वालिटी में, उसके एसओपी में विंटेज ईयर की वजह से फ़र्क आता है क्या? 100%. अच्छा. और वाइन्स में यूजुअली क्या होता है, इफ जो विंटेज होता है, ओके, यू कैन यूज, अगर लिखा है विंटेज, ईयर ऑफ हार्वेस्ट लिखा है, जो यूजुअली होता है, राइट, यू कैन यूज ग्रेप्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ईयर ओनली. यू कैन नॉट यूज ग्रेप्स फ्रॉम डिफरेंट ईयर्स. इट कैन बी अ ब्लेंड ऑफ टू डिफरेंट ग्रेप्स फ्रॉम दैट ईयर. इट कैन नॉट बी अ ब्लेंड ऑफ टू डिफरेंट ग्रेप्स फ्रॉम डिफरेंट ईयर्स, राइट. इन वाइन्स दैट इज द थिंग. और आपका, सॉरी, व्हाट वाज द क्वेश्चन? My question was कि मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी में, Exactly. आउटपुट में कुछ फर्क आता है क्या? 100%. As I said, wine is a living being, right? Right from the harvesting till the time of consumption, wine is constantly changing. So 100% change होगा, and it is desirable, right? Because the whole concept of drinking wine is understanding the personality of the wine, and it changes with different climates, it changes with different people making the wine, it changes with different methods of making wine, and different location, different climate, different soil, everything factors into the end production. Ideally, places with good terroir produces good quality wines, which can be consumed for a longer period of time. बट ऑफकोर्स ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और उससे चेंज होता है. इनफैक्ट वाइन तो अगर आप ग्लास में डालोगे तो भी वो वाइन चेंज होता रहेगा. सो इट इज़ अ कॉन्स्टेंटली लिविंग beverage, and that is the only beverage in the world which is a living beverage, and it evolves constantly, unlike spirits. Right. और आपने तो बहुत सारे, being a part of the restaurant industry, being a sommelier, you have definitely dealt with so many wine tasting sessions, right? सबसे costliest wine कौन सी होती है? So और कितने की होती है? The last time I heard about was Romane della Conti, which is from Burgundy, and the prices, say, it was sold in auction for $500,000. $500,000. Yeah, and it could be up and down also. It depends upon Single bottle का single price. bottle. Yes, single bottle. And the most expensive wine that I've sold was around 3 lakh rupees at Four Seasons, Mumbai. So that was one of the most expensive wine that I've sold. Sure, celebrities ही खरीदते होंगे इसको तो. So this was apparently bought by one of the richest Russian, Okay. who wanted to gift it to somebody, and he wanted to gift it to one of the India's richest man, Okay. and so that's why he bought the bottle. बनता भी है. Because yeah. Okay. तो सप्लाई चेन की हम बात कर रहे थे.
थोड़ा सा बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की। मान लीजिए आज हमने एक वाइन का ब्रांड लॉन्च किया, ठीक है, वी गॉट ऑल द सर्टिफिकेशंस इन प्लेस, वी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग द वाइन। अब हमें वाइन को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना होता है? So every state has a different policy in terms of distribution. Like there are certain states where the route to market is through the distributors. Certain markets which is through government supplies, right? So government distributes. They own the permit. They own the साउथ में है ऐसे। साउथ में है and नॉर्थ में भी बहुत सारी जगह पे है जहाँ पे गवर्नमेंट runs the entire distribution part, जो ठेके कहते हैं या फिर जो रिटेल्स कहते हैं। तो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से सीधा ठेके पे आता है या वाइन रिटेल शॉप पे आता है या बीच में और भी चैनल्स होते हैं हमारे? अगेन मोस्टली लाइक फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, तो आई विल टॉक अबाउट महाराष्ट्र। तो वहाँ पे क्या होता है, से एक कंपनी है जो वाइन इंपोर्ट करती है, वो वाइन्स आते हैं पहले इंपोर्टर के पास, उसके वेयर हाउस से वो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर फिर रेस्टोरेंट्स एंड बार में सेल्स करता है या फिर रिटेल में भेजता है। समटाइम्स देयर आर कंपनीज विच आर बेस्ड इन इंडिया एंड दे ड्राइव द सेल्स एंड मार्केटिंग फॉर दोज वाइन्स। तो ये चैनल होता है, ये रूट टू मार्केट होता है इन महाराष्ट्र। बट डिफरेंट states will have different, and it's a very in-depth process of understanding the route to market for different states. Yeah. Or how difficult it is for a new entrant to create a route to market in India? So मतलब क्या challenges आते हैं? So it is not difficult as such, but it is very capital intensive. तो usually wine industry में कहा जाता है कि in order to make millions, you need to be a billionaire first, because you lose out a lot of money, right? So ये पूरा distribution आपको जो set करना है ना, it involves inventory that you maintain, right? तो एक inventory आपका आपने बेचा है रेस्टोरेंट में, दूसरा inventory आपका डिस्ट्रीब्यूटर के पास है, रिटेलर के पास है, तीसरा इन्वेंट्री आप इंपोर्ट कर रहे हो, राइट? सो यू इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इन थ्रू द प्रोसेस, राइट? तो आपका पैसा अटका हुआ रहता है यहाँ पे, एंड यू रियलाइज द मनी ओनली आफ्टर से 2 months or 3 months, बिकॉज वैसा क्रेडिट पीरियड वैसा चलता है, ये सारा बिजनेस क्रेडिट पीरियड पे चलता है, राइट? अच्छा। सो इट इज यूजुअली इट इज say 2 months, 3 months, and there are certain retailers who get cash discounts. So cash discounts are basically अपने you immediately pay, you get discounts for paying. And most of these companies, okay, they also have targets of cash collection and maintaining minimum days of cash collection, and that becomes one of the talking point. But that's how the overall flow works, where the stock is in the retail, at the distribution point, and at the import and distributor, which is like technically in transit. क्या मार्जिन्स पे ये इंडस्ट्री ऑपरेट करती है? ग्रॉस मार्जिन, एक वाइन की बॉटल मान लीजिए अगर 1000 रुपीज की है, उसमें अंदाजा कितना मार्जिन होता होगा जो मैन्युफैक्चरर को जाता है? Okay, so I'm just quoting from what I heard about Sula is last year they closed their business at around 26% profits, right? Net profits. Yeah, 26%, and usually the gross margin is around 70%. Right? It's a very high margin then. It's a very very high margin, but then also look at it, it's a labor intensive, right? So everything is done manually, and you might have machinery for the fermentation process and all that stuff, but most of the part, right from harvesting and all, of course you have technology and you have those different specialized tractors, but growing wines is a labor intensive job, and overall if you look at the process, it is cost intensive. तो क्या इस वजह से ही एक रीजन आता है कि आपको स्केल करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है इस बिजनेस को? सो ये बिजनेस स्केल के ऊपर ही चलता है, राइट? द चैलेंजेस आर इन टर्म्स ऑफ स्केलिंग, बट यू अर्न गुड मनी व्हेन यू स्टार्ट स्केलिंग. द मोर यू स्केल यू एंजॉय द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बिकॉज आपका प्रोडक्शन कॉस्ट पे फर्क पड़ जाता है, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स कम हो जाता है, बिकॉज यू बाइंग एवरीथिंग इन बल्क. And the supply chain becomes much more easier that way, right? You can target different markets and you can supply stock at once to different markets that way. Okay. अब मान लीजिए मैंने आज एक वाइन लॉन्च किया, नया ब्रांड लॉन्च किया, एंड अब मुझे उसको मार्केट करना है, सेल करना है, right? तो आपके हिसाब से क्या सही तरीका रहेगा कि मैं उसको मार्केट करूं? Okay, so in India you cannot do publicity of alcoholic beverages openly, right?
सो आपका एक होता है सरोगेसी राइट, Surrogate marketing. मार्केटिंग हाँ, सॉरी yeah. एक्सक्यूज मी, तो होता है आपका सरोगेट मार्केटिंग राइट, वेर इन यू हैव कैसेट्स और टी शर्ट्स और डिफरेंट प्रोडक्ट्स, सोडा बॉटल्स एग्जैक्टली, मतलब हम उस ब्रांड की बॉटल दिखाने की बजाय उसी ब्रांड का सोडा वाटर यू क्रिएट मार्केट करते हैं। हाँ। अगेन अभी गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन डाला है क्या है कि उसका अगर आप सरोगेट कर रहे हो, आपने नया प्रोडक्ट बिल्ड किया है, देन दैट प्रोडक्ट शुड हैव सर्टेन रेवेन्यू अटैच टू इट। अगर रेवेन्यू अटैच नहीं है एंड आपने बोलने के लिए कहा है कि हमने सोडा का ब्रांड लॉन्च किया है, पानी का बॉटल लॉन्च किया है, इफ यू नॉट एक्चुअली सेलिंग इट देन इट इज नॉट अलाउड। इसीलिए हम देखते हैं मैकडॉनल्ड्स सोडा और ये सब काफी आते हैं। एग्जैक्टली, सो लॉट ऑफ ब्रांड्स हैव सर्टेन वे ऑफ सरोगेट। देन बट मुझे ये पूछना है कि आपने बोला रेवेन्यू अटैच, व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू अटैच? सो दैट प्रोडक्ट शुड ड्राइव रेवेन्यूज 20 lakhs प्लस, ऐसा कुछ अच्छा, मिनिमम कुछ थ्रेशोल्ड है, देयर इज अ मिनिमम थ्रेशोल्ड कि उतना रेवेन्यू आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए, तो ही आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, नहीं तो ये तो एक अल्कोहल का ही मार्केटिंग हो गया राइट। हाँ हाँ, So that is one of the way. Okay. The second way is driving advocacy. Now, advocacy could be training the staff, training the consumer, hosting consumer master classes, hosting wine sessions, whiskey appreciation sessions, and so on and so forth. Right. Then collaborating with different brands or events. जैसे कि बहुत सारे GQ events होते हैं, फिल्म फेयर होता है, अवार्ड्स होते हैं, अलग अलग होते हैं राइट इवेंट्स, ऐसे कि यू कैन कोलैबोरेट विद दोज काइंड ऑफ इवेंट्स, सो अगेन यू गेट अ गुड विजिबिलिटी in the market. Then you can collaborate with different brands to showcase your brands better. Like for example, किसी brand ने watch के साथ collaborate कर लिया, and then you showcase excuse me, then you showcase that brand better to the consumers, right? So that there are different ways of doing it. अभी social media जब से आया है, तो there are lot of influencers making cocktails at home, using different alcoholic beverages and promoting it, right? I'm not yet sure. बट क्या ब्रांड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं? अभी बहुत पुश कर रहे हैं। I'm not really sure if it is legally allowed or not. वही मैं पूछना चाह रहा था। अगर I'm not really sure. So it's a gray area basically, right? So I really don't know about it at the moment, right? बहुत सारे लोग करते हैं, but I don't know whether it is allowed or not. It's a gray area. बट आपको लगता है कि एडवर्टाइजिंग अलाउ कर देनी चाहिए गवर्नमेंट को? In my opinion, आप see advertisement होता क्या है कि it creates an awareness, okay? And अगर हम ड्रिंक रिस्पॉन्सिबल का कैंपेन रन करते हैं, एंड लाइक इफ यू लुक एट इट, लॉट ऑफ डिजीज के ऊपर हम अवेयरनेस कैंपेन रन करते हैं राइट। हमने पोलियो के ऊपर अवेयरनेस रन किया, हमने एड्स के ऊपर अवेयरनेस कर दिया है, हमने लॉट ऑफ इश्यूज दैट वीव टेकन अप at a India level, and we've created awareness using different brand ambassadors, and I think alcohol is one aspect. Uska awareness agar aap build karo, and if you promote drink responsibly and the ways of rightfully consuming alcohol, I think it could be a positive moment for the development of the nation. That's what I feel. मतलब देखा जाए तो म्यूचुअल फंड भी रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है राइट, एंड creating ads or marketing mutual fund is allowed, right? But you put up a disclaimer that they're risky advertising, so why don't government allow the advertising of a particular brand of whiskey or alcohol? वो भी कर देना चाहिए उस हिसाब से। तो so there is one caveat to this, okay? And how it will differentiate to social media is like, अगर TV देख रहे हैं तो TV has access to everybody, right? But when you go to website like apps like Instagram and Facebook, it filters, right? आपको age डालना पड़ता है, so technically it filters you by age. So and when you're doing content also, you can select the age bracket that you want to sell your content, right? So it is targeted marketing towards a certain age, who is the legal drinking age, and maybe that's the reason why people are able to do it, but otherwise जहाँ पे भी इजी एक्सेस है, जैसे कि कोई होर्डिंग्स पे कोई भी इजीली पढ़ सकता है या फिर टीवी पे कोई देख सकता है, वहाँ पे अलाउड नहीं है. That could be one of the reasons. Yeah, segmentation could be one of the reasons. Exactly. Yeah. बट डिजिटल ई कॉमर्स ऑनलाइन सेल्स तो कर देनी चाहिए ना, वो भी अलाउड नहीं है इंडिया में वाइन या अल्कोहल बेचने का. जो ऑनलाइन सेल्स की बात करते हैं हम लोग, राइट, और होम डिलीवरी की जो बात करते हैं, ग्लोबली इट्स अ ह्यूज बिजनेस, इट्स अ बिग रेवेन्यू अर्निंग बिजनेस. ओके, इंडिया में अभी तो कैलकाटा में और उड़ीसा में
they have already started doing. And what I personally see after talking to my friends and people in the community, it is doing fantastic. It is doing phenomenal, and it is picking up. It's a good source of revenue generation for different companies. Again, I'm not sure when it will be, you know, scaled at an India level, but the states like Calcutta and Orissa are seeing positive results in terms of the consumption, in terms of the overall experience of home delivery that way. बट आपको लगता है ये होना चाहिए इंडिया में? ऑनलाइन ई कॉमर्स में अगर बोलें, अमेजोन पे जाके अगर हम विस्की खरीदना चाहें, डू यू थिंक इट शुड बी देयर? In my opinion, yes, because then you're creating different ease of access to people, right? How they can choose the way you want to consume, right? अगर आप देखोगे बहुत सारे स्टार्टअप्स, ओके, जैसे कि दे ट्राई टू एड्रेस द कंज्यूमर प्रॉब्लम्स एंड दे हैव क्रिएटेड अ ह्यूज बिजनेस, राइट? दिस कुड बी वन ऑफ द कंज्यूमर प्रॉब्लम वेर इन दे हैव टू, अगर एक केस भी बाय करनी, दे हैव टू गो टू अ शॉप, बाय अ ह्यूज केस. अगर उनके पास गाड़ी है, they have to travel in the local transport, right? And then get the bottles at home. उसमें कुछ गिर सकता है, कुछ टूट सकता है, right? So again, it's a pain point, and it's a valid pain point जहाँ पे you can create, and the supply chain is already existing, right? जैसे कि Blinkit है, and Zomato, and there are a lot of other Swiggy है, and this could actually give or you could say that it will help other business to build new businesses from scratch in terms of supply chain or in terms of delivery for specific to alcohol business. So I think यहाँ पे potential मुझे बहुत बड़ा दिखता है to create new businesses, to create a scalable business in the supply chain, and by providing easy access to alcohol at home delivery. टैक्सेशन भी एक बहुत बड़ा रहता है हमेशा. हर साल हम देखते हैं कि बजट आया और इस साल और टैक्स बढ़ा दिए अल्कोहल के ऊपर, जीएसटी और ऐड कर दिया. आई थिंक इस टाइम पे सिगरेट्स एंड अल्कोहल के ऊपर सबसे ज़्यादा एक्साइज या आपका जो जीएसटी रहता है वो है. तो बट कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स इट इज़ नॉट, ऑब्वियसली बाकी प्रोडक्ट्स में कम रहता है, राइट? तो उसके ऊपर आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए? कम कर देने चाहिए टैक्स? So since you spoke about cigarettes and alcohol, let's focus on cigarettes first. Okay? तो आपको पता है कि बजट जब आता है तब सिगरेट का प्राइस नेचुरली इंक्रीज किया जाता है. So ये this is one thing that I have heard in the business. Like there are a lot of distributors in FMCG who might be supplying the produce, the daily essentials, right? What they do is ये मैंने सुना है खाली, so they sell the essentials at loss during that phase, and whatever the money that they get, they buy and stock cigarettes. Because cigarette का जैसे प्राइस ऊपर चला जाता है, they sell those cigarettes. So that's how they earn huge money into that Interesting. People find ways to make money anyway. So I found it really funny and worth sharing. Yeah. I'm not sure if it's true or not, but it is doable, right? And when you talk about alcohol, okay, so any imported product, be it wine, spirits, has 150% of taxation. So इसके लिए why spirits and alcohol is so expensive in India? बाहर वही चीज बहुत सस्ती मिलती है, यूएस में, यूरोप में. एग्जैक्टली. जो $10 वाइन्स होती है यूरोप में, वो यहाँ पे आते आते उसकी प्राइस 2000 हो जाती है, राइट? एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द टैक्सेशन, देन देयर आर मार्कअप्स, देन देयर आर लेबल रजिस्ट्रेशन, देयर आर लॉट ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्वड, राइट? एंड व्हेन यू टॉक अबाउट डिफरेंट स्टेट्स, एवरी स्टेट विल हैव डिफरेंट प्राइसिंग, डिफरेंट टैक्सेशन. So that is mota cost structure. I'm sure government also does a lot of subsidies for Indian wines produced in Maharashtra. So I think they get a certain amount of subsidies for producing quality wines. They have a certain rebate in GST also. So they have certain benefits, and that's why they are able to sustain. Otherwise, it's a very cost-intensive business to look at. And honestly, Sula has been able to sustain and do business at such a scale is because they have a history of producing for 10 years plus, right? So जो भी experimentation था initial stage पे कर लिया, now they have got a set formula of producing wines. They have got set markets. The brand is really built. They have started producing quality wines. Now they know what to do, right? They have a password or a formula of doing the business in the right fashion. And that's how the business works, right?
एक ना इंटरेस्टिंग सिगरेट के अंदर मैंने एक चीज़ पढ़ी है काफ़ी बार. ऐसा होता था कि दो अगर ब्रांड्स हैं और आपस में compete कर रहे हैं एक मार्केट में, सो देयर वाज अ वेरी फेमस केस स्टडी जहाँ पे एक ब्रांड ने उस पर्टिकुलर रीजन में दूसरे कॉम्पिटिटर का सारा स्टॉक खरीद लिया और वो खरीद के अपने पास स्टोर कर लिया और अपना स्टॉक अबंडेंस में अवेलेबल करा दिया सो दैट उस मार्केट में लोगों को उस ब्रांड की सिगरेट पीने की आदत पड़ जाए. वो 2-3 महीने तक स्टॉक आउट करते थे दूसरे ब्रांड को, अपने ब्रांड को रखते थे शेल्फ पे ताकि लोग जो सिगरेट पीने वाला है उसको तो पीनी ही है. अब वो कोई तो ब्रांड पिएगा, अब वो वही जो अवेलेबल है वो पीने लग गया और एक बार हैबिट फॉर्म हो गई. उसके बाद वो उन्होंने वापस से वो स्टॉक डालना शुरू कर दिया दूसरे ब्रांड का, क्योंकि तब तक उसका मार्केट शेयर एक्वायर हो चुका था. वाइन में ऐसा होता है क्या? मैंने वाइन में ऐसा सुना तो नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट एट अ डिस्ट्रीब्यूशन एंड अ रिटेल लेवल ये हो सकता है, वेरिन but competition ऐसा, हमारा competition laws are very strict in the country, right? So I mean जरा से भी भनक आती है then it's a huge loss to the company, right? So there it might happen, but at the moment I do not have any idea of doing that. और अगर किसी को आज एक वाइन स्टार्टअप शुरू करना है, ऑल्दो इट्स वेरी कैपिटल इंटेंसिव, बट किसी को वाइन स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो उसको कैसे समझना चाहिए यार ये वाइन का गैप बोलते हैं ना कि कंज्यूमर गैप आइडेंटिफाई करना. हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम देखते हैं कि ये मार्केट में ये नीड है कि नहीं है. अब आपने बोला है 6 लाख से ज़्यादा वाइन्स ऑलरेडी है मार्केट में, इतने सारे ग्रेप वाइन्स हैं, राइट? अब हाउ डू यू फिगर आउट कि यार क्या यूनिक कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर? सो विथ वाइन्स एक तो चलो कंज्यूमर डिमांड हम समझते हैं, ठीक है, बट there are only certain grapes that you can grow in a certain climatic conditions, as we spoke about terroir, right? So one can experiment, and there have been a lot of experiments happening at different regions in India with different grape varietals, but not everything is suitable in India, right? You can't grow all the kind of grape varietals purely because of our climate, our conditions, right? So innovation जो भी हो सकता है वो whatever we can produce in the country, and उसको कैसे हम अलग से दिखा सकते हैं. जैसे कि अभी रिसेंटली देयर आर लॉट ऑफ वाइनरीज, ओके, जो मेजर प्रोड्यूसिंग वाइनरीज है, they realized that now we've started growing good quality grape varietals. Okay, we've experimented a lot, now we know this is our forte, these are the grapes that showcase the best in India. They started creating a unique or a super luxury wine of their own, like premiumizing the entire wine experience. So Sula has their Rasa series, Grore Zampa has their different insignia series, which is again a very unique and limited collection. Then Fratelli has Junun series, which are expensive, good quality wines, and these wines are made as good as equivalent to international standards, right? So उनका pricing भी expensive होता है, but they deliver the quality of wine. और वाइन के साथ सबसे अच्छे कौन से फूड्स जाते हैं हमारे? Okay, so of course you can enjoy any food with any wine, but the general concept is white wines pair really good with fish and chicken. Red wines usually pair with meat, but I'm of an opinion. Vegetarians? Of course you can experiment with different food, but I'm of an opinion wherein you can eat and drink initially to start with whatever you like, and then see what tastes better for your palate, and then that's how we progress. But wine and cheese का combination इतना famous क्यों है? Right. So cheese क्या होता है? Cheese is fatty. Cheese has जब हम खाते हैं तो हमारे palate के ऊपर एक oily texture आ जाता है. Wine has tannins and acidity. अगर आप white wine बोलते हो तो उसमें acidity होता है, which cuts the cheese. Tannins works with the fattiness of the cheese and creates those unique flavors on your palate, and that's why you enjoy the flavors. It creates a unique flavors on your palate, and you enjoy those flavors, and that's the reason why you prefer drinking wine and cheese. एक पहले आपसे पूछते हैं नेशनल सोमलियर एसोसिएशन के बारे में कुछ, और फिर हम आपसे पूछेंगे योर रोल एट बकार्डी, व्हाट यू हैव बीन डूइंग, और क्या करते हैं आप उसमें. नेशनल सोमलियर एसोसिएशन है क्या और क्या उसका रोल है? Okay, so when I studied
my wines, and trust me, it was very difficult because the access was limited. There were not many people that I could speak to and understand how to become sommelier and how can I study. So my whole idea was not to become a sommelier. My whole idea was to study wines. I happened sommelier, which is a very unique story. But कि study wines कैसे करें और मैं क्या करूँ, मैं आगे बढ़ूँ कैसे. The access was limited, and that's the reason when I got into this different competitions. When I won those competitions, I studied all those different certifications which I mentioned earlier. I thought that how might what if I start creating that access which I missed to the consumer, to the professionals. So in Mumbai, and there were people from different parts of the world. By the way, our Indian sommeliers are globally very well known because we are hardworking and we got a good palate and our understanding of wine is really good. So I thought of why not I gather all those people and train them on how to taste wine, how to understand wines, and create that awareness. So I went to different hotel management schools, universities. Then I created this group of sommeliers. The concept was to get one bottle of wine, and I used to ensure that they get wine, but nobody knows what they're getting. So we used to do blind tastings, basically put the wine into a glass and identify what the grape varietal is, where it is coming from, what is the year it was produced, and what are the flavor profiles. And then you decode the grape varietal and so on and so forth. And that's what you study in those certifications. So I started giving that kind of knowledge to professionals so that we could build a community. And the most important thing is, okay, having knowledge is one thing, but the most important thing is passing the knowledge to people and ensuring that that knowledge is spread across and people can learn and actually implement things in the city and the country. So that was the whole idea of Indian National Sommelier Association. And there were a couple of more people who were a part of this when I opened. There was Balu, there was Ankur, and many other people involved into this association. And till date, there are other people who are taking active part into training other people. And also, I am proud to say that because of this group, in the initial level, we were able to pass on the knowledge and information. Apart from that, create job opportunities, or at least share those job opportunities on this platform so that people could apply and get a job. Interesting. Bartender बहुत fascinating रहता है, हम देखते हैं फैंसी दुनिया सी लगती है वो. एक बारटेंडर की अच्छे टॉप 3 स्टार 5 स्टार अगर हम रेस्टोरेंट की बात करें, वहाँ पे क्या सैलरी रहती होगी एक बारटेंडर की? So salary for bartender depends upon knowledge, experience, scope of work, right? But आज की तारीख में अगर आप देखोगे, okay, bartending is considered as a skill job like chefs, right? And good bartenders identify themselves as mixologists, bar chefs, and mixoms, right? Based on the experience, okay, the starting point could be upwards of 25 to 30,000 rupees in a standalone restaurants. A good mixologist, a good bar manager, or a head bartender could earn up to 50 to 60,000 rupees in India. And somebody who's exceptionally good, won competitions, or who's created a personal brand can earn upwards of 1 lakh rupees and so on and so forth. And this is the latest development. This kind of money was not available when I was doing bartending or working on the restaurant floors. But this is a development of you could say 5 years, 6 years, that people have started respecting and taking bartending and the overall cocktail culture seriously, and you would see the overall trend only growing in the future. What is your role in Bacardi? So in Bacardi, when I joined, I was a brand ambassador. Okay, so the role of a brand ambassador is to train bartenders, to talk about the brands, the advocacy part, to host consumer events. So अगर कोई whiskey tasting चल रहा है, then I would host it. I would be talking and explaining the consumers about what whiskey it is, how to consume whiskeys, how you can pair those whiskeys, and so on and so forth. And then the whole idea is to create a desire for a brand and drive transaction through promotions, through events, and so on and so forth.
So that was the core essence of being a brand ambassador. And what I'm doing currently is I'm working as a co-founder of Greenhouse by Bacardi. So Greenhouse is an innovation program to build new businesses for Bacardi. So it's a sort of entrepreneurship role wherein we are building new businesses beyond bottles for Bacardi. What do you mean by new businesses? So, एक तो Bacardi as a company is known for alcohol and is known to produce non-alcoholic and alcoholic beverages, right? So our job was to work on businesses which are strategically aligned to our core business, but something beyond alcohol. So it could be, I'm just giving examples just for that matter. It could be into hotels and restaurants. It could be into consultancy. It could be finding new consumer pain points into this business and addressing those pain points of the consumers. To put it simply, that was the whole idea. But when I say beyond bottles, it is completely over and above what the main business is doing into different aspects of the businesses. Interesting. मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला आज आपसे रिगार्डिंग वाइन बेवरेजेस क्या खाना चाहिए वाइन के साथ सो मच ऑफ इंसाइटफुल इंटरेस्टिंग डिस्कशंस मोर देन दैट आई थिंक द पार्ट अबाउट लर्निंग सप्लाई चेन of the overall wine and beverage industry in India and alcohol producing part of the supply chain, वो बहुत amazing insightful discussion थी. कुछ कहना है आपको especially to people who want to be in this space, who want to become a sommelier, or who want to be an expert in wine? Anything you want to say to them? I think this is the best time to be into hospitality to begin with. Irrespective whether you're a waiter, you're a bartender, you're a sommelier, you're a chef, or anybody who is working into restaurant and bar industry, the industry is only booming. Okay, in future I anticipate that the demand for skilled staff is only going to increase. So, if you're listening to this, okay, and if you can start working on yourself, upgrade yourself, upskill yourself, build knowledge, and pass on that knowledge to people, you will eventually grow and scale in your professional career. And this is the best time to be into Indian hospitality. That's correct. Amazing. Thank you so much, Harish, for being here. I enjoyed. मुझे बहुत मज़ा आया. Definitely बहुत जल्दी आपसे वापस मिलेंगे and फिर और interesting प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे जो हायरिंग रिलेटेड रहती हैं इस इंडस्ट्री की एंड विल टॉक मोर अबाउट दैट सून. So Nitin, it's my pleasure to be on this platform and share my thought process, my viewpoints, and I hope it reaches to larger audience and they understand the industry, the wine industry or the overall beverage industry better. Thank you. Yeah. Thank you.